So can you all see the slides now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, today we have to talk about public finance, isn't it? Okay. But I know you all are economics student. For you all, public finance is not something not unknown. So we will talk in the light of, how we can use it in research and how research is conducted in these particular arenas. Okay, we will talk in that light. The task of economic stabilization requires keeping the economy from straying too far above or below the path of steady high employment. One way lies inflation and another lies recession. I hope everyone knows that whatever economics we study is for our what? Stability, isn't it? For economic stability we study. So that we can have an interaction also. Okay? Okay, ma'am. Okay. So now when we talk about economic stability, presently if we discuss this in the scenario of research, are we living in an era of economic stability? Tell me yes or no. I would say some sort of. Yes. Because, we have few examples where economic stability is at stake. For example, recently we are seeing the crisis of Sri Lanka. Similar type of crisis is coming up in Pakistan, various other countries also. This is economic unstabilization. The reason may be any. That is where the research comes into picture. Then they cop up a very big question for researcher. Is India moving on the same path of Sri Lanka by giving freebies? We are giving lots and lots of freebies. Our fiscal deficit is quite strong. So can we do it? A country with a population in which only 5 to 6% pay tax and actual tax is paid by only 2% of the people. Can we afford so many freebies? What are your views? See, I'm not going to talk about these things like that, because today I am sitting here that we have to discuss these things. Otherwise, for PhD, it is of no use. In PhD, open your cameras. In PhD, if you have to understand public finance, then you have to know about these issues. So do you think that can we afford these freebies or we cannot? These freebies will create problem to us also, na? Yes, ma'am. See, we are paying the highest cost of petrol. Yes. In our Indian subcontinent. Why? Because 30 years back, when there was a liberalization, we took some loan and we are paying off. So today, what freebies we are going to give, again, we are going to be taxed for it. And the tax burden is going to speak. So what I am saying is that whatever I am discussing is in the light that how these things is, dismantle things. Now, public finance is nothing but the study of income and expenditure of government at central, state, and local level. This is what we have studied. Now, when we say government have to perform certain function for which it needs money, and it is its responsibility. So that is why the public finance becomes very important. It is the study of income and expenditure of the government. But in broader view, public finance does not deal only with income and expenditure of government. It also deals with the sources of income and base of expenditure through which the government work. So we will see how these things affect our overall picture and how these things should be managed so that we don't fall into some bad debt trap. Here we have to talk about government's accountability, public accountability, and other things. So in that light, let me talk
on one by one. That is public expenditure. If I first start discussing with you public expenditure, then what comes in your mind? Expenditure done by the government. Yes, obviously, we are talking of expenditure done by government. Now, if we say that this public expenditure can be divided into three parts: public expenditure, public revenue, and public debt, isn't it? Now, let's Yes, start ma'am. one by one. Wages and salaries. Now, do you think in India any wage differential exists or not? Exist. Yes. Yes, ma'am. Yes, Exists. ma'am. So there are lot of PhD avenues if you are working on wage differentials. If you want to study the gender gaps in that, again there is a big scope. Then the wages between public sector and private sector differ. Then wages between different levels differ, isn't it? Yes, ma'am. So it provides us lots and lots of ways to understand it. Why public sector units are becoming sick? They are paying hefty salaries, but the productivity is low. So is wage and salary hike is directly related to productivity? Higher wages, higher productivity. Do you agree with it? Higher wages always doesn't bring higher productivity. Yes, ma'am. So we have ample amounts of researchable issues in it. Then subsidies, another big debatable issue. Are you in favor of subsidy or against it? Ma'am, in some cases it is good, but not. Yes. Some. In some cases it is good, but not always. And again, it is more of a type in which again there is an axis in which we may go. But in India, for farmers, I say subsidy to some extent is necessary because again there is a gap of 92% of our farmers are under a very pathetic situation because our land holding is very small, and then they have to depend upon subsidies. But for large farmers, I don't think any need of subsidy, and we should always not opt for those subsidies for those. क्लास चल रही है इसके बाद बात करूंगी. Another is expenditure on goods and services such as infrastructure. Now, government task is to provide infrastructure to public because we pay tax. Roads are built by government, and today we have seen a very good example in UP that we are connected with lots and lots of highways. Number of national highways have come up all over the India. And especially in UP, especially Uttarakhand, I'm saying Bundelkhand region, Purvachal region, those parts which were not having good connectivity, we are seeing that they are linked with connectivity. So it is part of government projects, and we are seeing that it is working. Electricity. Now, a big debate occurs in electricity. Government is privatizing most of the electricity. Now, in privatization, the charges will go very high. Now, if the charges are going, what will be the situation for the poorer people? What is to be done? Then in electricity, again, we are moving towards solar panels. That is, government is giving subsidy. You generate your own electricity. And if you are able to provide it to government, then government is going to pay you back. You know this structure of electricity coming up in India? इस concept का पता है? Yes, ma'am. Yes, What ma'am. is this project called? Government is giving subsidy on it. So one of the researchable problem could be that we can work out on the cost benefit analysis of it. Whether the subsidy given by government is going to be good for the government or bad for the government. Then telecom, yes. Again, we are going to auction 5G. We are moving towards 5G. Now 5G again will have problem, like airports will not be able to use 5G. The more and more signals are going to be, they will conflict with the flights. So it should not be there. Then if you have good penetrating power, then crime and corruption also increases with 5G.
So again, there are a number of issues with 5G. Then human capital accumulation like health and education. In socialist system, it is supposed that government should provide health and education. In developed nation, we are seeing that government generally provide at least the health part. But in India, the highly paid people, the people who are paying high taxes are also not being provided with health or education. So these are the things which are debatable. Health is becoming very cost intensive. आप बीमार पड़ते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका इलाज ना हो पाएगा. More, but this time government has said that it is going to create more and more hospitals. Now again there is a debate whether it will be private or public hospital, because private hospitals are going to be very expensive. Like in Lucknow we have a good study of Medanta, Apollo, and on the other hand we have PGI, RML, and then on a very old length we have KGMU. So it's a comparative study. One of my student is doing on efficiency of referral care hospitals, public versus private. Now, when we talk of referral care, then it comes to PGI, Apollo, Medanta, and all. Now, how these how we are working on the efficiency of it. So again, it is a pure economic research, education. We have new education policy. The education policy gives lots of flexibility. It is moving towards the pattern where we are going to be at par with the other part of the world or globe where faculty education is there. But are we really preparing ourselves, our students from childhood to flexi education? Flexi education means if you want to study, you study, or if you want to work, you work. But are we making them skill ready? Is the driver on road who is driving the vehicle is skilled? No, because once you give them a skill, the cost will increase. हमारे तो 10,000 में ड्राइवर मिल जाता है, but is 10,000 sufficient to bring up a family? But in India, we have people who work with a monthly salary of 10,000. So there are a number of issues which are of interest in economics concerning with public finance. Interest, expenditure, whether the interest rate should go up or interest on saving and deposit, whether it should go up on loans, etc. These are again government decisions, but it affect all of us. NPA, a big problem in banking sector. Lots and lots of banks are coming with NPA because we are having episodes like Nirav Modi. It is not because of the farmer or freebies. It is because of the people like Nirav Modi, Reliance, other who are making themselves sick by eating the money, not paying taxes, not paying the interest in EMIs in time. So that is all public expenditure, and we have to think about it, because the more and more NPA, the more and more problem with government. Now, public revenue, different sources of government revenues with major focus on tax. We have moved to the system of GST. One of the students is working on GST, impact of GST on textile industry. Similarly, you all can work on GST impact on number of industries, because a few industries are impacted positively and few are impacted adversely. But yes, it's a way you can work on. Public debt. Often public revenue falls short of expenditure, whereas to borrow, internal and external borrowing. States are doing from central borrowing from foreign aids. So those are the things which we have to talk about and on which lines we should work. Public expenditure is the end and aim of collection of state revenue. It involves judicious expenditure of public for the most important and socially and economically relevant activities of state. The term public expenditure refers to the expenses incurred by government for its own maintenance, and also, now when I say government for its own maintenance, here comes नेताओं के bill, उनके खर्चे. Each minister is given a high-tech Z security. On whose money? On public money.
वर्ल्ड में कहीं भी इतनी बड़ी फ्लीट नहीं चलती है नेताओं की जितनी इंडिया में चलती है, and it is all on the expense of common people. So do Yes, ma'am. government need this much expenditure? Yes, there is a time to cut down these expenditures. We as a citizen should say, yes, government need to cut down expenditure. It's a very white collared expenditure with the bureaucrats, and government is incurring on themselves. There is a need to look on it, both central and state I'm talking about. It refers to the expense of public authorities, central, state, local government for protecting the citizens, for promoting their economic and social. Now, when we talk of economic and social welfare of common people, then comes all the welfare projects with the government launch. And since in India we have population, especially after pandemic, it has become very disgusting that 65% of the population is living below $3 a day. And this is a very pathetic situation. किसी कंट्री की 60-70% जनता अगर $3 a day के नीचे रहती है, 150-200 रुपए की पर डे पे जी रही है, तो कहाँ से खाएगी? और फिर उनको उस पर्टिकुलर तबके को फ्रीबीज प्रोवाइड करना कितना रैशनल और कितना नॉन रैशनल है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक फैमिली में 5 लोग हैं, और हम अगर उन 5 लोगों की बात करें तो उस पर्टिकुलर फैमिली को राशन मिलना चाहिए कि हर आदमी के हिसाब से राशन मिलना चाहिए, एंड उस फैमिली में किस तरह से राशन मिलना चाहिए. सो देयर इज नंबर ऑफ थिंग दीज फ्रीबीज आर हैविंग प्रॉब्लम विद, जिसका सही इवैल्यूएशन नहीं होता है. बीपीएल का इवैल्यूएशन सही नहीं होता है, इसीलिए बेनिफिट्स बहुत अलग ढंग के हो जाते हैं. गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द स्कीम ऑफ 1 राशन कार्ड, वेरी मच नीडेड. हायर इनकम ग्रुप के लिए राशन कार्ड एलिमिनेट हो गया है, बिकॉज देयर इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू मेक द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज इवन फॉर दीज थिंग्स आल्सो. फ्रीबीज should be checked. It is the right time that we should start checking also. The pandemic has brought things that time it was necessary, but now we have to think on it. Public revenue, this is one of the branch of public finance. It deals with various sources from which the state might derive its income. These sources include taxes. Now we have eliminated most of the type of taxes apart, and we are having mostly GST and service tax, and other gift tax and other things are there. But we have to see how these taxes, how basket, and we have seen that GST collection has increased a lot in past few years. That is because of the online system, because online system brings transparency in the system, and the more and more transparent if you make the system, like banking system has become transparent. Black money is checked to a lot of extent. Real estate have shattered because of this. So these checks and barriers are going to improve the economy also, and sometimes they can play as a negative player also. Public debt में हमारे पास loans हैं by various sources. हम वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेते हैं और फिर उसको पे करते हैं इंटरेस्ट के साथ. Now डायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम था, लोन्स, एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक बोरोइंग्स है, ग्रांट्स फ्रॉम डोनर्स एंड फॉरेन एड्स हमें आती हैं, प्रॉफिट पर गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस और स्टेट ओन्ड. तो इस तरह के रेवेन्यू जो कलेक्ट होते हैं इन पे हम काम कर सकते हैं. वी कैन एसेस the role of taxing system, how these taxes can be compared with any of the developed nation or maybe from the developing nation, how this tax is hampering our balance sheets and all. हम उस तरह से कैसे लोग टैक्स छुपाते हैं, especially if you work on service tax, people are not paying it, and so on. Now the aim of tax is simply to raise revenue, to bridge income gap, to influence allocation of resources in economy. But problem यहाँ पे आती है जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसपे हम लोगों को एज अ रिसर्चर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा इंडिया में दे रहे हैं. हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, हर आदमी टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है. ये सिर्फ सर्विस टैक्स है जो गरीब आदमी नहीं दे रहा है, बाकी हर तरह का टैक्स. एक सामान खरीदते हैं उस पर बहुत तरह का टैक्स, बहुत तरह के टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं सिस्टम में. तो ये कहना गलत होगा. Even whenever we buy a single toffee, उसमें भी मेंशन होता है including all taxes.
Yes, very good. Who I want you all to talk in this, क्योंकि ये सच्चाई है. हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम बहुत ज्यादा हम टैक्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं सिंपल फ्लैट सिस्टम ऑफ टैक्स अगर आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर आदमी, इवन गरीब आदमी भी टैक्स पे कर रहा है. इट इज नॉट सो दैट पीपल आर नॉट पेइंग टैक्स. It is wrong to say people are not paying tax. It is only the service tax which only few are paying. And those who are paying service tax are paying an additional burden. तो कहीं ना कहीं अभी भी जो टैक्स रिजीम है, आई डोंट एग्री विद दिस टैक्स रिजीम. There should be tax regime where we should have flat taxes. अरे हमसे इकट्ठा तुम ले लो 50% टैक्स, 60% टैक्स, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटीज भी तो दो. Let everything be transparent. You are taking 50% of our salary, then give us a surety for few things. Our old age, our health expenditure, our education. Take 50% of our salaries. You agree with me or not? Absolutely agreed. That Yes, is what ma'am. I'm saying. We are paying at around, I think, 70% of the tax. You know, some class in India is paying 70 to 80%. But are we getting any security or surety? No. तो कहीं ना कहीं ये टैक्स सिस्टम से आई डोंट एग्री एज अ रिसर्चर. तो आप लोग इस पे काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाने का मेरा कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़ चुके हो या हम भी पढ़ चुके इकोनॉमिक्स में. बट अब बात आती है कि इन पे हम कैसे आगे रिसर्चेबल काम कर सके, जो कोई पॉलिसी हम निकाल सके. तो टैक्स का काम होता है रेवेन्यू बढ़ाना. जीएसटी इज वन वेरी गुड थिंग, बट देन अगेन देयर इज अ बिग थिंग कि व्हाई फ्यू थिंग्स आर आउट ऑफ जीएसटी गैमेट, स्पेशली पेट्रोल. एवरीवन वांट्स इट टू कम इन द गैमेट. पेट्रोल का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम उसमें तो एक्साइज ही दे रहे हैं सबसे ज्यादा, और इसीलिए गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि कब पेट्रोल के, जैसे अभी इलेक्शन टाइम में हमने देखा 100 दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब 16 दिन में 10 रुपए बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए. Yes, तो ma'am. ये चीजों पे हमें सोचना होगा. दैट इज द वर्क ऑफ अ रिसर्चर. इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में एक तालमेल हो, उस चीज पे हमें देखना हो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहा है, वेयर वी कैन पुट आवर फिंगर. यस, this is not going to public, this is going to your own kitty. You have to check these things. So influence allocation of resources in economy. Yes, कहाँ फ्लो ऑफ कैश देखना होगा. आप फ्लो डायग्राम्स बनाइए, कैश फ्लोज देखिए, बैलेंस शीट स्टडी करिए, और देखिए कि किस हेड में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, और उसको अगर हम हटा देते हैं, जैसे एनपीए, मैंने कहा ना, एनपीए सबसे ज्यादा हमारे बिग बिजनेसमैन से आ रहा है. अब कोई तो ऐसा रूल हमें बनाना पड़ेगा जो ये एनपीए खत्म हो. भाई किसकी कॉस्ट पे ये एनपीए जा रहा है? अल्टीमेटली तो हमारी इकोनॉमी जा रही है ना. बैंक का बट्टा बैठ जाएगा, हमारा पैसा गबन हो जाएगा. तो एनपीएस में भी आपको हर चीज में आपको एक्सप्लोर करना है किसकी वजह से हो रहा है. रिसोर्स एफिशिएंसी की हमें बात करनी पड़ेगी. हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास लेबर सरप्लस है, बट ये लेबर हम सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी. चीप लेबर का मतलब ये नहीं है कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो. आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है लेबर का. इवन एज अ स्कूल टीचर्स पीपल गेट एक्सप्लॉयटेड. वी हैव टू चेक दीज थिंग्स. देयर शुड बी लॉज as stringent as in developed nation where total privatization is there. There you cannot cheat a person easily. So we have to come up with those stringent laws in each and every sphere so that things are checked. Big size of bureaucracy is not needed. A small thing can manage number of things. So that is resource allocation is needed. To regulate negative activities or negative externality. Yes, negative externality, especially, this solar panel issue has come up to check the negative externality, because बिजली बनाने में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, लॉसेस है, और फिर वो घर पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. तो उसकी जगह अगर आप सेल्फ बना रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, सो इट इज मच बेटर.
So that is the way you go with reverse logistic and you check the externalities. The influence of distribution of income. Now this is a big thing. आपको ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, rich becoming more rich and poor becoming more poor. So distribution of income is very important. How you distribute your income. You charge super rich tax. That is needed. But you cannot tax a person who is earning, very small amount of income. 5 लाख तक टैक्स नहीं होना चाहिए. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं. To bring about equity and fairness. इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी कस्टम ड्यूटीज आती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अच्छी न्यूज है, कोविड के टाइम में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कवरेज कम हुआ. It's a good way of studying that for how it happened. What are the products which increase our export? Especially health कुड में हम बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते थे, वो हमने खुद बनाना शुरू कर दी, फिर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बेचने लगे. So those are the things we have to explore. Excise duties and domestically produced good. Yes, make in India, make for India, Startup India. These are the initiative which we have come up. VAT has been abolished, sale tax gone. What are the hidden taxes on goods and services? We have to see the hidden cost. There are a number of government if we are giving investing in private banks, there is a lot of hidden costs. So we should work on those hidden costs also. There we should see these things, check these things. Burden of tax is shifted from producer to consumer. Most of the time it happened. GST क्या दुकानदार दे रहे हैं? नहीं. It is again shifted to consumer. So how to manage things? How do we do it? Those are the things which we have to check. Income tax, another big way, but how to, rationalize it. Property tax, personal levies, fines, penalties, fees, licensing. These are some of the ways, where there is a lot of scope to work and move about. Certainty. Adam Smith canon of good tax system. Certainty. कुछ टैक्सेस में बहुत सर्टेनिटी होती है, कन्वीनियंस होती है, इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबिलिटी, इक्विटेबल और फेयर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे और सुटेबल. तो ये सब चीज़ों, ये हमारे पैरामीटर्स हैं. इवन जीएसटी के लिए हम इन पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन से वेदर दिस सिस्टम इज बेटर देन द ओल्ड वन और नॉट. नाउ Laffer curve, we know that shows relationship between tax revenue and tax rate. The curve first increases, reaching a climax, then started falling. So there is a limit to how much tax can be imposed, as low taxes leads to compliance and high taxes leads to. अभी जीएसटी में क्या किया गया? बहुत सारे गुड्स को 0% पे रखा गया ताकि वो कमोडिटी को टैक्स में दिखाया जा सके. उसके बाद उस पर 1 और 2% टैक्स भी लगाया जा सकता है, या जो 22, 23, 28% पे है उनको नीचे लाया जा सकता है. आप जितना टैक्स कम करते जाएंगे आपका बास्केट बढ़ता जाता है, और जितना टैक्स बढ़ाते जाते हैं आपका बास्केट को लोग छुपाने लगेंगे, बताएंगे नहीं. लेकिन अगर आप 0 पर, आप अभी जीएसटी नंबर असाइन करने की बात क्यों हुई कि टैक्स नहीं, इतने परसेंट जो जिसका इतना टर्नओवर है वो टैक्स नहीं दे. उसके पीछे हिडन पॉलिसी क्या है कि कभी भी वो टैक्स नेक्सस में लाए जा सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Every trader becomes accountable by taking a GST number even if he is paying tax or he is not. अभी तो आपने कह दिया इतने टर्नओवर के नीचे का हम टैक्स नहीं देना है. बहुत से लोगों ने कह दिया हमको तो बस इतना ही टर्नओवर है, हम टैक्स नहीं देंगे. लेकिन अ टाइम विल कम व्हेन इट विल बी सेड दैट इतने परसेंट टैक्स वालों को एटलीस्ट 1% देना है. आपकी बास्केट एकदम से बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 1% भी आपका कुछ करोड़ हो जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. So these are the ways, how things should be imposed and exposed. ये कर्व है, इस तरह से जाता है. लॉरेंस कर्व के बारे में तो आपको पता है, इनकम इक्विटी, गिनी रेशो से हम इनकम, ये गैप बढ़ता जा रहा है, और ये गैप बढ़ता जाएगा तो हमारी
डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। इंडिया की एवरेज इनकम क्या है और मीन इनकम क्या, मीडियन इनकम क्या है और मीन इनकम क्या है पर कैपिटा है? What is mean and median per capita income of the country? The median per capita income of India stood at $616. $616 का मतलब क्या हुआ? यानी आधी से ज्यादा जनता को $616 से कम मिलता है। समझ रहे हो? आधों को इससे ऊपर मिलता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है इंडिया के लिए, क्योंकि हम बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। ये बातें नहीं पता है आप लोगों को? 21 में इंडिया की पर कैपिटा थी 87,000 रुपीज। 87,000 रुपीज एनुअल इनकम क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। अब वो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की है, तो आधी पॉपुलेशन की तो है ही फ्यू से। सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, गिनी रेशो पे यही सब काम हम लोगों को करना होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ टैक्स, जीएस, इस समय तो जीएसटी इज अ वेरी हॉट थिंग। You all can talk on GST, how the flat system of tax in various countries and how that can be accommodated, how one single, बहुत सी कंट्रीज में सिंगल है या 2 ही टैक्सेस है, तो you all can do work on that. Now government expenditure, aggregate demands equal consumption expenditure by household plus invest. Now here there is one big thing. If we talk of demand, what is your view of demand, presently market demand? Batao, what are your views on market demand? बताओ। Aggregates of individual demand is called market demand. नहीं, इट्स ओके, थ्योरी तो सबको पता है। मैं अभी बोल रही हूँ कि इंडिया में इस समय डिमांड का क्या सिनेरियो है इंडियन मार्केट में? डिक्लाइन हो रही है डिमांड। डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो रही है बिकॉज परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई है सिटीजन्स की। बिल्कुल, पीपीपी कम हो रही है। यस मैम। यस, द डिमांड इज डिक्लाइनिंग। नाउ व्हेन डिमांड इज डिक्लाइनिंग, व्हाट विल यू डू विद योर प्रोडक्शन? मार्केट सब में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगा। यस मैम। सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, उसका आउटपुट नहीं, आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। यस मैम, फर्दर प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्दर प्रोडक्शन के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यस मैम, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया, फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा तो। हाँ, और हम एक पॉवर्टी नेक्सस में घुस जाएंगे। यस मैम। इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यस मैम, ये एक अनदर इशू है। डिमांड भी कम है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। हाँ, डिमांड कम है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगेन अ प्रॉब्लम। दिस इज अगेन अ मल्टीपल प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद। और इसकी वजह
वजह से रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट भी नहीं कम कर पा रही है। इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यस मैम। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट नहीं कम होगा। यस क्यों? यस मैम। तो यानी अगेन वी आर इन अ प्रॉब्लम। होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रही है, वेयर एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट रही है। मैम, हम्म? जो इस तरह की सिचुएशंस है, तो कोरोना में जितनी भी पॉलिसीज बनी थी, तो मतलब सप्लाई साइड को ध्यान में रख करके ही बनी थी। तो ये सिचुएशन जो इस तरह की आ रही कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और डिमांड जो है डिक्लाइन हो रही है, इस वजह से तो नहीं है कि मतलब सप्लाई साइड को ही हम लोगों ने जो है सिर्फ कंसीडर किया, उससे रिलेटेड ही पॉलिसीज जो है हमने फ्रेम की थी। नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या है मार्केट में। बिफोर कोविड, इफ यू ट्राई टू सर्च, कोविड से पहले भी तो मार्केट डिमांड काफी स्टेगनेंट थी। प्री कोविड जाओ, जीडीपी क्या हो रहा था? डिक्लाइन हो रहा था मैम, वो तो हो रहा था। यस मैम। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही थी। रीजन वाज कि देखो, कभी भी ओवर ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। मार्केट वाज फ्लडेड विद गुड्स एंड बायर्स वाज नॉट दैट मच। ठीक है, आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन मार्केट में तुम देखो वेजेस आर नॉट गुड। हर आदमी को आप दे नहीं पा रहे हो जॉब। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, खरीदेगा कौन? और कोविड ने इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया। इवन जो लोग एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए कोविड पे। भुखमरी का दौर आ गया। यस मैम। अब तो ये हालत है कि जो पॉवर्टी 28 थी, इसको कोई उतना अच्छे से कैप्चर करके फिगर्स नहीं आउट कर रहा है, पर द पॉवर्टी इज नाउ 40%। क्योंकि कोविड ने बहुत बुरे हालात कुछ बिजनेसमैन के लिए आए, कुछ सर्विसमैन के लिए आए। बहुत से लोग आउट ऑफ जॉब हो गए, बहुत सी दिक्कतें आ गई लोगों के पास। तो जब पावर मनी नहीं है तो डिमांड कहां से रह पाएगी? इसीलिए गवर्नमेंट इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा वो कर रही है, प्रमोट कर रही है, क्योंकि समहाउ इट हैज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। और अगर वो सर्विस जॉब्स देती है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज्यादा नहीं वैकेंसी है, बहुत खाली पड़े हैं। अगर उतने ही भर दे तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, पर वो उनका अपना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं पॉलिसीज को बहुत ज्यादा रिशफल करने की जरूरत है इस समय। प्राइवेट में यू हैव टू कम अप विद स्ट्रिंजेंट लॉस, ताकि जो बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े हाउसेस हैं, बड़े हब्स हैं, वो सारा प्रॉफिट अपने पास ना रख लें। एटलीस्ट सम प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ decent wages. You agree with it? Like Tata are known for their good policies. Incentives मिलने चाहिए प्राइवेट में, because they get ample profit. Now they should share this profit in form of some decent wages and incentives. अगर ये शेयर करेंगे तो मार्केट में मनी आएगी, लोगों के हाथ में आएगी, तो लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। So these are all policy flaws which really need to be catered off. समझ गए? यस मैम। यस मैम। ट्रेड साइकिल तो सबको पता है। बूम आता है, डिप्रेशन आता है, बूम आता है। अभी हम डिप्रेशन में चल रहे हैं। पीक्स आती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सब तो एवरीवन नोज। सो इसमें हम हेफिंडॉल एंड हिर्शमैन इंडेक्स निकालते हैं, और इस इंडेक्स के बेसिस पे हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, नॉट नीडेड मच। बट मेन चीज हमारा है कंसेप्ट वाइज फॉरेन एड।
एक लिमिट, ये अच्छा है कि हम पिछले कुछ सालों से फॉरेन एड पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हम इंटरनल डेप्थ में तो हैं, पर एक्सटर्नल डेप्थ को काफी हमने कम किया है। बट चीजों को हमें देखना ही पड़ेगा। एड्स अभी भी बाहर से आती हैं, उन एड्स को चेक्स एंड बैरियर्स लगाने पड़ेंगे। एंड फ्यूल, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम पेट्रोल एंड फ्यूल्स कर रहे हैं। हाउ वी कैन वर्क ऑन इट, we have to move towards CNG and other things. Then we have to move towards, electronic vehicles, because coming is the time when we have to think of solar and electricity. अगर ये दो तरह की व्हीकल्स या मोड ऑफ कन्वेंस नहीं हो, आने वाले समय में हमें एनवायरमेंटल कंसर्न होंगी। नाउ सी द प्रिकली हीट ऑफ मई में कभी इतनी हीट होती थी? नहीं होती थी, but today we are having it. So those are the ways we have to think on it. So we are going to talk this much, then we can share today's thought, your views, so that tomorrow we can start. हाँ बताओ। As a student, if you have to do research on public finance, what are your arenas where you will work for? Hmm? Tell me. Most of you have switched off the camera. Except Achal and Ram, no one has opened the camera. मैम मेरा भी ऑन है। नहीं, तुम्हारा भी, सॉरी शबाना, आपका भी ऑन है। करिश्मा ने ऑन किया, अखिलेश ने ऑन किया। I am also on. Yes, you are there, Ram. I can see you. Harshita Agarwal. Harshita. Neha Singh. Sonal Yadav is open. Why you all are not opening? बताओ, पब्लिक फाइनेंस पे कुछ करना है कि नहीं करना है? किसी का टॉपिक पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है? वैसे तो नहीं है मैम, बट one thought in mind that by the government is the contractualization of workforce. What is the impact of household saving? That ma'am, something explain this. बेटा स्थिति बहुत खराब है पोस्ट पेंडेमिक। लाइक इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो 4 साल से अप्रेजल्स नहीं आए हैं। कुछ जगह आ गए हैं, मतलब दे आर गोइंग टू कम, आई एम नॉट सेइंग, बट 4 इयर्स पे सेविंग की स्थिति क्या हुई? लोगों की डिमांड, लोगों ने सिर्फ जरूरत खरीदी है पिछले 2 साल से। दे हैव ओनली स्पेंड ऑन नेसेसिटीज, नॉट ऑन लग्जरीज और मोर देन दैट। तो हमारे जो कुछ सेक्टर हैं, लाइक एपरल्स, टेक्सटाइल, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ये सब बहुत ज्यादा डाउन गिर गए। ट्रैवलिंग, टूरिज्म, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। Now economy is a basket full of all sectors. जब कुछ सेक्टर बिल्कुल चले गए, दूसरे सेक्टर्स को कितना रिवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब क्या हो रहा है, जब हम बाउंस बैक कर रहे हैं इकोनॉमी में, हमारे कुछ क्वार्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। ये कहा जा रहा था, इंडियन मूडी ने कहा इंडिया की ये रेटिंग है बिकॉज वी हैड अ वी शेप रिकवरी इंस्टेड ऑफ यू शेप रिकवरी और अ वेरी स्मूथ सर्कुलर रिकवरी। वी वेंट डायरेक्टली टू वी शेप। दैट वाज नथिंग। हम पुराने लेवल पे वापस आ रहे थे। अभी क्या हुआ, लोगों ने घूमना शुरू किया, लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, खाना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, यानी ओल्ड ट्रेंड पे वापस आना शुरू किया। बट अभी हम पुराने लेवल पे भी नहीं आ पाए, क्योंकि जॉब मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। पीपल आर आउट ऑफ जॉब, स्पेशली middle level people have been lot who has been cursed with, people
came and just said goodbye to the people and they were out of job. स्विगी, जोमेटो, हजार लोग यूं ही निकाल दिए गए थे. फ्लिपकार्ट, स्पेंसर, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, पता है ना, हजार के लोग एक एक कंपनी से यूं ही निकाले गए थे. जब आदमी निकाल दिया जाएगा तो वो क्या खाएगा? रोटी नहीं थी खाने को तो खरीदेगा क्या? And that is the hard reality. Now what is happening, people, companies have started recruiting. Even in our organization, recruitment has started. तो ये भी इकोनॉमी को वापस आने में, अभी तो वापस आने में अगले 2 साल और लगेंगे. Because still we are living in a very uncertain world where we don't know whether this pandemic has ended or again it may rebound. And we may visualize a small short lockdown just we had in January for around a month. जनवरी में हमने एक शॉर्ट लॉकडाउन देखा था 1 महीने का. So we still don't know anything. Secondly, again the geopolitical problem is there. Ukraine crisis. We are standing at the door where we can have any time the world war also. Nothing is ruled out at present. Anything can happen. And wars are very costly. Wars are very costly to any country, to globe, to humanity, to mankind. आज जो ऑयल की हालत हो रही है, हम कह रहे हैं सरकार ऑयल पे, सीएनजी पे, सब पे पैसा बढ़ा रही है, गैस पे बढ़ा रही है. But are we checking the international prices? What to do? कहां से लाएगी सरकार? कहां से देगी? कैसे देगी? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हर एरेना में है ना. So today, really in the history, we are living in a phase which is really very hard and harsh. And where we really need very hard policies which can revive our economy. High transparency, corruption-free nation we have to have. Or else number of people will have to suffer for it. Only few will become rich and other will be out. So if you are moving, my policy recommendation for government is that if you are moving towards privatization, bring up very stringent laws for it. Privatization is not wrong, but it has to be governed with some laws. Do you agree with me or not? Unless and until we have stringent laws, this privatization is going to eat your own country. So we have to think in that direction. Okay? So, sufficient for today. We will move tomorrow. Actually, I don't want to do the classroom teaching. This is a research class and it should happen in a research mode. That if public finance, then what are the arenas where we can work? Okay? If this topic, then what are the ways we can work? Okay? Thank you. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. अटेंडेंस तो लग गई होगी ना? पता नहीं है वो आज की अटेंडेंस के लिए सुरेश सर से बोला, उनको पहले इस चीज को नोटिफाई करना चाहिए था कि मैं स्क्रीनशॉट लूंगी. इतने सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट कर गए, देन वो स्क्रीनशॉट ले रही हैं. कितने बच्चों की अटेंडेंस जो है वो नहीं लगी है. ठीक है, इसमें कौन सा? इसमें हम लोगों का तो कोई फॉल्ट है नहीं, उनको पहले बताना चाहिए था ना कि स्क्रीनशॉट लिया जाएगा. मैं पूछ लूंगी, जो होगा फिर बता दूंगी. ठीक है, ठीक है, बाय बाय.